कैसे हैं आप लोग। आई होप ये वाली सारी वीडियोस चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स की आप इंजॉय कर रहे होंगे। टुडे वी आर डूइंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें था सम ऑफ जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा and product of zeros is alpha beta because two zeros are alpha and beta. Here we are going to deal with cubic polynomial. So cubic polynomial के लिए होता है sum of zeros is alpha beta and ये जो third है इसको हम कहते हैं gamma. So alpha plus beta plus gamma is minus b by a. You have to remember it as minus b by a as मैंने आपको initially बताया था। और दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट वन टाइम। इसका मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी बाय ए। व्हाट इज सी बाय ए फॉर अस? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x cube. Now third is alpha beta gamma, that is what? Product of zeros, that will be minus d by a, which is minus constant term upon coefficient of x cube. अब ये सब क्या है? इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी ax cube प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. सो a जो है वो x क्यूब का कोफिशिएंट है, जो b है वो x स्क्वायर का, c x का है और d क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म। सो आई होप आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल के भी ठीक से समझ आ गए होंगे क्योंकि इट इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बदलती है और यहाँ पे एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज और ऐड हो जाता है। अगर अभी तक आपको ना भी समझ आया हो सो वी विल डू द क्वेश्चन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि there is not a big difference between quadratic polynomial and cubic polynomial. Okay, let's start the question. Verify that 3 minus 1 and minus 3 are the zeros of the cubic polynomial. अब कोई भी तीन zeros को verify करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये तीन जीरोज इक्वेशन में लगाने होंगे और उनको जब हम सॉल्व करेंगे और हमें ज़ीरो मिलेगा सो वो वेरीफाई हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन और देखते हैं क्या ये तीनों ज़ीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के। नहीं, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा अगर हमें ये तीनों ही उसके ज़ीरोज निकले। ओके, सो व्हाट इज़ पी एक्स फॉर अस? पी एक्स इज़ 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 3। फर्स्ट ज़ीरो हम क्या लेंगे? P3। P3 का क्या मतलब है? जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम उसको 3 लिख देंगे। So this will be 3 into 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 and minus 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s is 1 1 1. 3 square is 9, 9 5s is 45 minus 33 and minus 3. So 45 36 will give us 21. No, it was 81. Right, so this was 81. So this becomes 81 minus 81 is 0. So आपका जो p is equal to 3 है वो वेरीफाई हो गया। Let us check for p minus 1. p minus 1 में हम चेक करेंगे 3 into minus 1 whole cube minus 5 into minus 1 whole square। जहाँ जहाँ हमें x मिले उसको हमें सिर्फ -1 से रिप्लेस करना है एंड चेक करना है इफ वी आर गेटिंग 0। अब -1 होल क्यूब विल गिव अस -1, -1 इंटू 3 -1, -1 का होल स्क्वायर +1 बट यहाँ माइनस ऑलरेडी है। -11 इंटू -1 विल गिव अस +11 एंड दिस इज -3, -8 एंड -11, 11 minus 11 is 0। p -1 भी हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ लेट्स वेरीफाई p minus 1 by 3. 3 into minus 1 by 3 whole cube. 5 into minus 1 by 3 whole square. Minus 1 by 3 and minus 3. Minus 1 by 3 का whole cube क्या होगा?
-1/3 into -1/3 and into -1/3. So this will be -1/27. -1/3 का होल स्क्वायर क्या होगा? +1/9, क्योंकि -1/3 into -1/3 will become plus. Now minus into minus is plus, it will become 11/3 and -3. 3 को हम इससे काटते हैं, this gives us 9, so it will be -1/9 -5/9 plus 11/3 and -3. So हमारा इसका LCM हो जाएगा 9. 9 divided by 9 gives us -1, then it will be -5 plus 9 divided by 3 is 3, so 33, and it will be -27. So -6 and -27 is 33. 33 minus 33 is 0. So it is also 0. That means 3 minus 1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial. Now let us see the next question and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इनके वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है? इससे वेरीफाई करना है. I'll explain you how. वैसे 10th में कई बार ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बट बिलीव मी, एक बार अगर मैथ्स अच्छा लगने लगता है ना, देन सबसे अच्छा सब्जेक्ट और बिना याद रखने वाला सब्जेक्ट, बिना रटने वाला सब्जेक्ट एक यही है. इसमें वंस आपका इंटरेस्ट आ जाए और आपको पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना है, रटने का इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस से आप सब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं. ओके, अब हमारे हैं इस पार्ट पे, दैट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप. वेरीफाई द रिलेशनशिप मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा should be equal to -b/a. Before this, what is a in the question? A is 3, b is -5, c is -11 and d is -3. And what is alpha? Alpha is 3, beta is -1 and gamma is -1/3. b की वैल्यू क्या है? -5, so minus of -5 upon 3. Let us check if LHS is equal to RHS or not. 3 LCM है, 3 divided by 1 is 3, 9, 9 minus 3 and -1 should be equal to +5/3. So this is also 5/3 and this is also 5/3. So sum of zeros verified. So now where we have to move? We have to move to the sum of products of two zeros at a time. So that is alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma should be equal to c/a. Alpha into beta, so 3 into -1, then -1 into -1/3, then 3 into -1/3 should be equal to c. c is -11 and a is 3. This is -3, minus into minus goes +1/3. This get cancelled and gets -1. Now we'll take the LCM. 3 divided by 1 is 3 minus 9 plus 1 and -3 should be equal to -11/3. -9 minus 3 is -12. -12 plus 1 is -11. So -11/3 is equal to -11/3. So with this we are done with the second verification. Now we have to jump to the third verification, that is alpha beta gamma, that is the product of the zeros. So what is the product of the zeros? Alpha beta gamma should be equal to -d/a. Alpha is 3 into -1 into -1/3 should be equal to minus of d. So minus of -3 upon 3. This get cancelled, minus is plus. This also get cancelled and minus into -1 is +1. So with this the verification of product of zeros is also done. So with this you will
understand the difference between the quadratic polynomial and the cubic polynomial. इसमें first हमें लेना है alpha beta plus gamma, then alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. It is better remembered as sum of the product of two zeros at a time, and then is alpha beta gamma, that is the product of the zeros. And हमारी जो cubic polynomial का standard form होता है वो होता है ax cube plus bx square plus cx plus d. So इसके साथ हमारा first question finish होता है. Let us do few more questions of the cubic polynomial. Let's see one more question of cubic polynomial. Find a cubic polynomial with the sum of the products of the zeros two taken at a time, that is alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. Product of zeros are as 2, -7 and -14 respectively. अब sum of zeros क्या है? Sum of zeros means alpha plus beta plus gamma is 2. Alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to -7, and alpha beta gamma is given as -14. Question से यही समझ आ रहा है? Now we have to form a cubic polynomial ourselves. जैसे हम quadratic polynomial बनाए थे लास्ट एक्सरसाइज में, so उसका जो जनरलाइज फॉर्म था that was x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros, because that was quadratic polynomial. Now the generalized cubic polynomial is k, हम ऐसे ही लेते हैं, it's any real number, so हम उसको ना भी लिखें तो चलेगा, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में k लिख लेते हैं. So that is x cube minus sum of the zeros into x square plus sum of the zeros of the product of two taken at one time into x minus product of the zeros. अब हम इसको कैसे सेट करेंगे? k हमने यहाँ लिख दिया, x cube minus sum of the zeros is 2, so 2x square, and then plus sum of the zeros of the product of two taken at the time minus 7 into x, and then minus product of the zeros. So let's see what is our generalized equation. X cube minus 2x square minus 7x plus 14. So जो हमसे यहाँ पर पूछा है ना, what find a cubic polynomial? This is a cubic polynomial when sum is given. Sum of product of two zeros taken at a time is the product of two zeros at a time is given, and the product of three zeros is also given. So आपको सिर्फ क्या करना है, ये इक्वेशन और ये तीन चीज़ें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए और ये सेकंड क्वेश्चन के लिए सिर्फ याद रखना है, and then no problem while solving the question. Next question is also very interesting. That is also about the cubic polynomial. If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b. So we have to find the values of a and b. Let's start the question. Now first of all, in this equation, what is a? A is 1, b is minus 3, c is 1 and d is 1. From this equation we have found the values from this standard equation. Okay. Now what is the sum of the zeros? Sum of the zeros is alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. What is alpha here? A minus b, beta is a, gamma is a plus b, and that should be equal to minus b by a. That means minus of minus 3 upon 1. Now a minus b plus a plus a plus b, b cancel हो गया, we get 3a. 3a is equal to minus into minus 3 is 3, 3a is equal to 3, so a is equal to 1. a की वैल्यू तो हमारी आ गई. So let's move to the product of zeros. Product of zeros क्या होता है? minus d by a. Product of zeros will be a minus b into a, ऊपर मैं लिख देती हूँ, alpha beta gamma is equal to minus d by a. So a minus b into a plus b should be equal to minus d upon 1. अब a minus b into a plus b, यहाँ पर भी आइडेंटिटीज आ गए. That is a square minus b square into a is equal to minus 1.
Now we know the value of a. So we will write, putting the value of a. A is 1. So 1 square minus b square into 1 is equal to minus 1. So 1 minus b square is equal to minus 1. So we will transpose the things. 1 plus 1 is equal to b square. So b square is equal to 2. So with this b will be equal to, अगर b square की value 2 है, so b can be equal plus minus root 2. And so easily we are done with the question. लगता ये वाला questions एक ऐसा है कि बहुत difficult questions हैं, हमें बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, but no, things are only about practice, and in maths practice makes the man perfect. So like the video, share the video, and do not forget to subscribe to the channel so that you get all these videos daily on time. See you soon.